Hello and welcome to season 3 of the podcast show Candid Talks with BharatV. और मैं हूं आपका दोस्त भरत वत्सा, द होस्ट ऑफ द शो, शिल्पा बालाकृष्णन। सीजन 3 के इस पॉडकास्ट सीरीज में हम जानेंगे शिल्पा की हिमालयन कॉन्क्वेस्ट की कहानी, उनकी जुबानी। Please do listen to the episode till the end. Before we begin, please do not forget to subscribe to this podcast channel and you can connect on Facebook page at CANDID TALKS with BharatV. The female solo biker from Mumbai who attempted the 90 days long Trans-Himalayan Conquest ride on her Domino bike in 2021. You are listening to CANDID TALKS with BharatV. So let's welcome Shilpa Balakrishnan. हाय आई एम शिल्पा बालकृष्णन, एक मोटरसाइक्लिस्ट जिसे घूमना बहुत पसंद है, who loves to travel a lot, at least in my country, और आप मुझे सुन रहे हैं only on Candid Talks with BharatV. Hello and welcome back to Candid Talks with BharatV. This is Bharat Vatsa, your host. In the last episode, हम लोगों ने सुना था कि उनकी जो जर्नी थी, आई थिंक हम लोगों ने टिल वडोदरा शायद हम लोगों ने कवर किया था। हाँ, तो आज के एपिसोड में हम लोग वडोदरा एंड ऑनवर्ड्स की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो वेलकम बैक टू द शो शिल्पा, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing well. Thanks for having me again over here. I hope people are happy listening to these episodes. थोड़ा सा इधर उधर when I'm in the plains it's boring, but when I get into the Himalayas it will start becoming more and more interesting. तब वो जैसे बोलते हैं ना, वो एक intrigue build होते जा रहे हैं, suspense. अब मैं कितनी बार गिरी हुई है सबको गिनना पड़ेगा by the end of the series. नहीं, हाँ, वो आगे पता चलेगा हम लोग कितने गिरे हुए लोग हैं। No, but I'm sure that as we proceed further, this entire discussion is going to get very, very interesting. That is for sure. And Absolutely. I myself, I'm very much waiting eagerly for that. So let's get started. So last जब आप वडोदरा रुके, उसके बाद से आगे, if you can let our listeners about your experiences. Sure. Just before that, I would like to also thank my coordinators, basically, and the route planners, Lalit Parmar and also Prutu Mehta. Prutu helped a lot in getting me the list of passes that I could do, and also he guided me a lot कि कौन सा रूट कैसे खत्म करना है, मतलब passes कैसे खत्म करना है, कहाँ से कौन सा लिंक ले सकती हूँ, all that. And Lalit Parmar has been my route planner ever since I started doing Pan India, and he's also a very good coordinator who coordinates everything for me. मतलब मैं जिंदा हूँ मर गई हूँ उसी से पता चलता है, मुझे भी नहीं पता चलता. Okay. So he was tracking you. He was tracking you through some yes. tracking there device was a or tracking something. device on my there was a tracking device on my bike as well. Okay. जो अजाज का है, so मैंने वो भी डाल के रखा था. अच्छा. So he used to track me day in day out, मतलब 24/7 he used to track me कि कहाँ पहुंची हूँ, कहाँ रुकी हूँ, कितना टाइम में, how many kilometers I have covered, कौन सा जगह से कौन से. So whatever I am talking to you is actually I am referring to the list that he has made an everyday account. Oh, so this is by what name? What is the name of the device? Ajas. Okay. Is a tracking. It's a safety device. Okay. So tracking भी करता है, alarm भी देता है. I mean, there are a lot of features around it. So आप जब मुंबई से निकले तो आप वो लगा के ही निकले थे? हाँ, लगा के निकली थी. Okay. So yeah, and that device is also pretty good. अगर आप गिर जाते हो इमरजेंसी में, it sends an emergency alarm to the immediate contact of yours. Okay. You can map it to a number of devices and बहुत कुछ है. Yeah, so I would like to
thank these two guys for being with me all throughout, especially Lalit, because he doesn't sleep. I sleep. वो तो वो भी नहीं करता कि कल सुबह Okay. उठ के उसको जाना है, उसके लिए अगले दिन का रूट as per where I'm staying, he has to reshuffle the route for me. He has Okay. to redo the route for me. या अगर बड़ौदा नहीं पहुंची और बीच में रुकी तो अगले दिन बड़ौदा पहुंच के आगे और किधर किधर जाना है, Mm-hmm. तो ये पूरा रीराउटिंग he does that. So Okay. he's been a very key planner for me. So yeah, so he virtually runs and I physically run. That's the difference around it. Understand. From Baroda, I went up to. So the plan was to reach Ajmer, Mm-hmm. but unfortunately, due to some other reasons, I couldn't reach. I started a little late because Baroda mein I had to meet someone. One and secondly, I had some activities which I had to complete because I was doing a course and उसका मेरे को submission नहीं हुआ था. And उन लोग ने उसी टाइम पे बोला कि तुमको अभी का भी सबमिट करना है, तो I had to complete some activities. So again I left late that day. Okay. But I Okay. left around 12ish from there. So obviously I couldn't go up to Ajmer क्योंकि बीच में ब्यावर का रास्ता पड़ता है which is a single lane. Okay. And that single lane to travel in the night is not advisable because there are many animals that cross during that time. Right. And कहीं गाय भैंस भी बैठ जाते हैं या तो फिर आप anything. कहाँ तक पहुंचे उस दिन? फिर आप कहाँ पे हॉल्ट किया आपने? उस दिन मैं ब्यावर का जो सिंगल लेन शुरू होता है उसके जस्ट पहले रुकी थी. अच्छा. And that place name is गोमती चौराहा. So this is in Gujarat itself? Oh, sorry, No, Rajasthan. this is Rajasthan. तो मैं उदयपुर सब क्रॉस करके हाँ. उदयपुर से भी आगे गई एंड Okay. ब्यावर पहुंचने के जस्ट सॉरी ब्यावर फ्रॉम देयर is 100 kilometer stretch of single lane. Okay. Although the roads are good, but Mm-hmm. people don't advise you to go during that, in the night travel karna. So what time you reached there in Gomti Choraha? Gomti Choraha, I reached around 11ish. Oh, so in the then night. how did you find the accommodation there? Actually, वहां पे कुछ दो लॉज थे. There were only 2 lodges. So वहां पे पूछा you किधर रुक found it सकते on हैं. phone somewhere or you saw it while Local riding? Google. My only map is local Google. Okay. I asked the people around Okay. who were sitting. Mm-hmm. तो वहां पे गई तो उन लोग ने बोला इस वाले में मत रुकना, उस वाले में रुकना, वो अच्छा है, वो रोड फेसिंग है, रोड टच है, एंड वहां पे सब कुछ लॉक करके रखते हैं. एंड मैं बोली ठीक है, सब कुछ लॉक, मतलब बाहर से गेट डाल के रखा था उसने, एज इन दो शटर्स दे आर पुट इट डाउन एंड ऑल. व्हाट आई डिडंट नो इज ही इवन लॉक्स द गेट. मतलब मुझे बाहर निकलना है इमरजेंसी में, वो भी नहीं निकल सकती. Oh, okay. So he locked the gate also. So it was that secure. Okay. Which was good of course. तो हाँ, वहां पे मैं रुकी रात को करीब. By the time I checked in, it was 11:30 or something. Mm-hmm. It was, but yeah, very comfortable stay, decent enough. No hanky panky stuff. सुबह मैं उठी, उसको पूछा नाश्ता किधर मिलेगा, दूध कहाँ मिलेगा. I drink milk every day. मेरे को सुबह में दूध चाहिए. Okay. बोला सामने ही मिल जाएगा, सामने में ढाबा था, लेके आके he gave me that also. Okay. तो वहीं पे लोकल नाश्ता किया and then I moved out from there. So from Gomti Choraha I went to Delhi Okay. that same day. Okay. So How was the weather? It should be pretty decent, right? I mean, yeah, it wasn't too bad. There were not too much of rain as well. okay. So it was okay. एक बार राजस्थान पहुंच गए तो actually नहीं था, बारिश था ही नहीं. Okay. Till I reached Delhi, or even after that there wasn't too much of rains as such. Okay. So I covered from Baroda to Gomti Chora, I covered about 460 kilometers. Mm-hmm. फिर उसके बाद अगले दिन दिल्ली के लिए निकली. दिल्ली was about 500 odd kilometers.
511 to be exact, if you ask for meter to meter, मतलब मेरे जो odometer के हिसाब से. What time you तो reached Delhi? around 10 o'clock I reached Delhi, क्योंकि वो सिंगल लेन पार करने में ही 3 घंटा चला जाता है. Right. And Okay. then from there so I reached I stopped at Jaipur actually. Jaipur Okay. में थोड़े riders है उनको मिली, and there Mhm. was one more person whom I was associating for some for road safety thing Okay. over there. So I said, and he happened to be there in Jaipur at that time. Okay. I said I'm crossing Jaipur, तो वैसे भी मुझे ब्रेक लेना ही है, तो I'll take a break over there. तो वहां पे रुकी, ब्रेक लिया, चाय नाश्ता सब किया, टॉक टू हिम, सो स्पेंट अबाउट एन आवर एंड हाफ और समथिंग. Okay. आई मेट अंकिता, आई मेट another नाम क्या था उसका, I keep forgetting names. So yeah, so I met a few riders over there. um, and uh, yeah, so I went Manish and one more guy. So I met all of them, and I left from there around 7ish. That's why I reached late in Delhi. Delhi. Okay. तो दिल्ली में 10 बजे के आसपास पहुंची, एंड वहां पे मेरे एक आर्मी पर्सनल मेरे दोस्त है, उनके यहाँ पे गई. तो ही वाज एक्चुअली इनसाइड दिल्ली का सिटी के अंदर. अच्छा. तो एंड एनीवेज मुझे दिल्ली में काम था, तो दिल्ली में एक दिन का स्टे था मेरा, 2 दिन का स्टे था यू कुड से. सो I reached late night that day. Then next day was a rest day. So again, I went out and met some few other riders around there. Okay. So whatever I had to plan, I planned around. So there was a flag off from Pramerica. So Pramerica being the title sponsor of this tour, Right. they had also arranged for a flag off by the CEO of their company. Okay. And which area was that in Delhi? Which location? That was actually दिल्ली में नहीं था, गुड़गांव में था. Okay. तो दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से फिर मेरे को बाहर निकलना था वैसे. Understand. So I went there around 9:30 something, and I also invited few of my lady bikers from Vima International. Vima is Women's International Motorcycling Association, and this is a global association wherein a president is appointed in every country, and they then add all the female riders who wants to join the association, and we conduct rallies within the country once in a year and things like that. So yeah, so who it is promotes leading basically. Okay, and who is leading this Vima in India? Vima in India is currently led by Anita Krishnan. Okay. She is Delhi based. And then there are other people, lot of other female riders are also in it. So few of them who were there in Delhi had come to see me off and for the flag off as well. So Anita, Taruna, Nirmali, Dimple, Suparna, quite a few of them. I think about 9 or 10 of them had come to see me off over there. So they were like super excited, of course, and I was so happy to see them, and it gives a kind of boost, when you have all your riders and all with you. Absolutely. अच्छा लगता है बहुत. बिल्कुल. तो एक as it is, I was jittery around this particular tour. तो उन लोग ने आके मेरा काफी motivation, I mean क्या बोलते हैं उसको, they boosted my energy. Right. So yeah, that was another thing that happened very positively. उसके बाद and they were invited in the at Pramerica's premises only. Okay. तो उन लोग आए, उन लोग के साथ बहुत मस्ती किया, फोटोग्राफ वगैरह खींचा, टाइम पास किया and all that. Then 10 o'clock the flag off happened. The CEO of the company, she flagged me off. फिर उसके बाद थोड़ा हल्का ब्रेकफास्ट वगैरह करके I left from there. And then I went to meet another guy. I hope you must have heard about Biker Broadcast. Yes. Shandy. Yeah. So I met him, and then from there I left around 12 o'clock. 12 बजते रहते मेरे. So from Delhi onwards, that is only in the plane that I take. Sorry, continue.
No, so typically ये थोड़ा सा late in the plains is fine for me because रास्ता मुझे पता ही है उस तरफ का, तो I am comfortable. I have been through that route n number of times. Okay. तो मैं रात में दिन में कभी भी जा सकती हूँ वो रूट पे. I am not scared or I am not nervous about it. So from there then I went to Ambala. अम्बाला पहुंचते पहुंचते फिर क्योंकि 12 बजे के बाद निकली थी तो अम्बाला पहुंचते पहुंचते 9 बज गया था. एंड उसके आगे इफ आई हैड टू रीच एनीवेयर अहेड आई वुडंट गेट अ प्लेस टू स्टे. तो अम्बाला में भी डिफिकल्टी था, बट आई कॉन्टेक्टेड द राइडर एंड ही सेड कि वहां पे एक राइडर का जगह है, मतलब एक वर्कशॉप है, सो मे बी यूल गेट अ प्लेस टू स्टे ओवर देयर. Okay. So not a very great place to stay, I would say, but then yeah, you can spend the night out there to sleep and get out. Okay. So this guy, I met him and he took me to that lodge. वहां पे मैं रुकी, freshen up हुई, then he took me out for dinner, brought me back, then I took a stay at night in that place. Okay. फिर सुबह में उठ के again, so I covered about Delhi to Ambala 280 kilometers. Right. फिर वहां से अम्बाला से मैं गई अमृतसर because like I said I have been nervous all throughout. So I went to अमृतसर वाली मत्था टेक के जाऊंगी. अच्छा, so you plan to visit Golden Temple? Yeah. Okay. Plan में नहीं था, but I inserted it into the plan. Okay. So last minute so because it is, हाँ वो ऑफ रूट हो जाता है, दैट इट डजंट इवन कम इनटू माय रूट, बट देन आई जस्ट फेल्ट कि चलो मत्था टेक के जाती हूँ. Okay. तो आई वेंट देयर. फिर वहां पे गई तो मुझे केपीएस एटीजी मिल गया. Okay. ही इज आल्सो राइडर ऑफ कोर्स, सो ही स्पेंड सम टाइम. मैं गई मंदिर में, जा ही टुक मी टू द गोल्डन टेम्पल एंड ऑल. देन केम बैक, देन उनके साथ लंच किया विथ हिम एंड भाभी जी. आई हैड लंच, देन आई लेफ्ट from there and I reached Kathua. Okay. Now Kathua is in Jammu, the first town, small town you could say, after entering Jammu is Kathua. Okay. Kathua again doesn't come into my route as such, but then Kathua में मेरा एक friend है and it was also गणपति time. अच्छा. तो गणेश चतुर्थी था. तो he said like तुझे दूसरे रूट पे जाना है, लेकिन तू अभी जाके कोई फायदा नहीं है बिकॉज यू वोंट गेट एनीथिंग टू स्टे आउट देयर. राइट. सो यू कम हियर, यू स्टे हियर, मॉर्निंग में उठ के तू चली जाना. ओके. आई सेड ओके, एनीवेज गणपति है एंड इफ आई एम इनवाइटेड देन इट्स अ गुड साइन. तो मैं ज्यादा होली ऐसे ये नहीं हूँ लाइक, बट देन या सर्टेन थिंग्स आई ऑलवेज फील के यू शुड बी थोड़ा बहुत भक्ति रखना चाहिए. तो हाँ, आई वेंट देयर. उनकी मम्मी है एंड ऑल दैट, सो आई हैड अ गुड टाइम. शाम तक पहुंची थी मैं, कुछ 7-8 बजे तक पहुंच गई थी. ओके. तो रात वहां पे स्पेंड किया, खाना खाया एंड ऑल दैट, एंड मॉर्निंग अगेन आई लेफ्ट. आई आस्क्ड हिम द रूट, क्योंकि अगेन वो सो ही हैज अनदर प्लेस इन बनी, एज एन उसका और एक घर है बनी में. Okay. So I had to go from there only to Circle, which was my first pass. So, and this is in which state? This is Jammu का terrain. अच्छा, so Bani तक also is in Jammu. आगे से आप जाओगे तो सर्कल के वहां से कश्मीर का वो ये शुरू होता है. अच्छा. Okay. So I went to Bani. That Bani was about let me think. Bani from Kathua is about 166 kilometers. Okay. But this is actually getting into the mountains now. Mountains, yeah. So 166 kilometers a day is pretty decent. Right. Enough. And of course the roads were not so good and single lane and काफी रास्ते खराब थे. काफी हद तक रास्ते खराब थे. एंड बीच में कोई ऐसा कोई बड़ा गांव नहीं लगता है. वंस यू रीच अटल, सो देयर इज दिस अटल, व्हाट डू यू से, अटल सेतु.
there's a bridge over the river, Atal Setu. You are listening to Candid Talks with BharatV. So Atal Setu has been built over this river and which goes towards Bani. वरना आपको काफी राउंड मार के जाना पड़ता है, like पठानकोट. So this route goes from so कथुआ से return एक about 10-15 किलोमीटर के बाद you have to take a left that goes towards one line goes towards Chamba, other goes towards Pathankot, and this other one goes towards Bani. ओके ओके. अच्छा, बनी ये वाला उस रूट रास्ते दिया पे. मैंने. ओके. हाँ, तो मामून करके जगह है, मामून से लेफ्ट लेना है. राइट. तो फ्रॉम देयर यू गो एंड वहां से बनी जाना था. ओके. तो रास्ते बहुत खराब थे, विच टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी एंड आई थॉट कि सनसेट के पहले पहुंच जाऊंगी मैं बनी, हाँ. बट वो नहीं हुआ. ओह. एंड जो बनी पहुंचने के लिए जो लास्ट के 15-20 किलोमीटर है, देयर आर नो रोड्स. ओके. तब तक रोड ठीक ठाक है, लाइक यू कैन गो. कोई कोई जगह पे तो काफी अच्छे रोड्स है. सो इज इट अ And- विलेज एरिया या फिर वो पूरा जंगल एरिया था पूरा? fully mountains, there's no village as such. अच्छा, बीच में कोई भी आबादी अटल वगैरह कुछ सेतु भी तक नहीं you'll get थी? some villages. ओके. अटल सेतु क्रॉस करने के बाद ज्यादा विलेजेस है ही नहीं. अच्छा. you'll hardly find anything. There was, I think 50-1 किलोमीटर चलने के बाद एक पेट्रोल पंप मिला था मुझे. ओके. उसके बाद कुछ नहीं दिखा मुझे. सो नो, मतलब जो भी मैं सुबह में नाश्ता करके निकली थी वही पेट में था, उससे अलग कुछ था नहीं मेरे पेट में. दोपहर में आपने कहीं पर भी मतलब लंच वगैरह के लिए नहीं, कहीं बिकॉज स्टॉप आई नहीं? थॉट कि चलो आगे कुछ मिल जाएगा, बट वो मिला ही नहीं. लेकिन मिला ही नहीं. बट वेर यू तो कैरिंग एनीथिंग इमरजेंसी के लिए अपने साथ कुछ कैरी किया था आपने? था, बट देन आई डिडंट फील लाइक ईटिंग. वो टाइम उतना ही और मतलब वो आगे खिंच जाता. कभी sometimes you feel you need to eat something warm, हाँ. or at least not hot but then at least warm, or something that could that you feel कि हाँ ये मुंह में थोड़ा अच्छा लगेगा. राइट. And मेरे पास थोड़े बिस्किट्स है. I don't like biscuits, although I keep it sometimes to to help me kill my hunger pang, but I don't prefer eating it. तो हाँ, मैंने कुछ खाया नहीं. ओके. एंड आई जस्ट, तो जो पेट्रोल पंप मिला वहां पे रुकी, थोड़ा फ्रेशन अप हुई. पानी दिया उसने, पानी पिया. वहां पे कुछ और था नहीं. ओके. थोड़ा फोटोग्राफ क्लिक किया बिकॉज इट वाज, आई मीन द व्यू वाज रियली गुड. ओके. सो 2-3 फोटोग्राफ्स क्लिक किए एंड चल पड़ी वहां पे. एंड वेदर वाज ऑब्वियसली गेटिंग कोल्डर. सितंबर महीना है तो ऑब्वियसली वहां पे कोल्ड होना तो शुरू हो ही जाता है उस तरफ में, पहाड़ पे. तो इट वाज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर. तो वहां से एग्जैक्टली जब 15 और किलोमीटर पहले सनडाउन हो गया था. तो जैसे तैसे तो चलाते जा रही थी. इट बिकेम वेरी टफ क्योंकि रास्ता दिख नहीं रहा था ठीक से. एंड यू बहुत डिडंट सारे हैव खड्डे एनी थे. ऑक्स लाइट. आई रिमेम्बर आपने पिछले एपिसोड में आई बताया डोंट था. वांट द ऑक्स लाइट्स. नहीं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द ऑक्स लाइट्स. व्हाट हैपेंस इज, इतना वो क्रेटर टाइप में आपके पास ऑक्स लाइट्स रहेगा तो भी वो क्रेटर में जाएगा, ऊपर नहीं थ्रो नहीं करता वो. ओके. So it just dips into that and you cannot assess के कहाँ तक खड्डा है या कहाँ पे पत्थर, अगला पत्थर किधर है. So it was that bad road. Okay. It was off-roading. तो वहां पे आप लाइट डालोगे तो भी नहीं दिखता, जो कार्स ट्रक्स आते हैं उनको भी नहीं दिखते. तो इमेजिन आप 4 लाइट लगाओगे तो भी नहीं दिखने वाला आपको. तो आई वेंट, ठीक है, एक दो वाटर क्रॉसिंग्स आए थे एंड ऑल दैट, क्रॉस किया, सब किया. एंड फाइनली आई केम टू दिस प्लेस. मतलब वहां से मतलब इतने में मैंने सिर्फ 5 किलोमीटर कुछ कवर किया था. अच्छा. दैट टुक मी अबाउट ऑलमोस्ट आई थिंक half an hour. Okay. To cross that 5 5 odd kilometers. kilometers something. And then this gushing water from the waterfall started. अच्छा, वाटरफॉल मिला वहां पर? हाँ, and full force वाला waterfall.
Okay. Literally full force. So it was मतलब coming on the road itself. या ऑन द रोड, मतलब आप अच्छा. खड़े रहोगे तो आपके नी डीप है वाटर. Oh, okay. That big. इफ यू स्टैंड इट विल बी नी डीप. अच्छा. तो एंड इट वाज अनइवन. Okay. मतलब कहीं पे आप खड़े रहोगे तो हाँ, आपका काफ तक आएगा, कहीं खड़े रहोगे तो नी तक आएगा. Okay. एंड द फोर्स इट वाज इन फुल फोर्स. Okay. तो एंड रात में दिख भी नहीं रहा था. हाँ, लाइट मार के देखा तो वो पानी तो क्लियर ही रहता है. हाँ. तो रास्ता नीचे का दिख रहा था पत्थर उत्थर. Right. बट as I entered, and I entered from where it was, where I judged that it should be shallow. Mm-hmm. उस तरह से निकली मैं. Mm-hmm. Of course डर भी लग रहा था because the flow was really मतलब it was a very क्या बोलते हैं उसको, Strong current था उसका, strong मतलब flow. strong Yeah, force it था. was strong flow, very strong Mm-hmm. flow. Mm-hmm. कि आप खड़े रहोगे तो आपको धक्का मार देगा वो, Okay. वैसा. सो वो भी माइंड में था कि आई वाज स्कैर्ड अबाउट दैट कि यार कहीं गिर विर गई तो. एंड ऑफ कोर्स नो वन ऑन द रोड, नाइट हो गया, नो वन ऑन द रोड. Right. तो ठीक है, चांस लेके मैं धीरे धीरे किया. आई पुश माई सेल्फ, आई वाज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द वाटर. Okay. लास्ट में वो थोड़ा सा चढ़न था. अच्छा. चढ़न ग्रेवल प्लस रॉक. हाँ, हाँ. एज एन इट वहां पे ही डीप था. जहां से मुझे बाहर निकलना था वहां पे डीप हो गया था. Right. Yeah. एंड ऊपर वो थ्रस्ट नहीं, बिकॉज आई वाज एक्सेलरेटिंग एट अ स्टेडी पेस सो दैट आई कैन Mm-hmm. मूव आउट ऑफ इट. Yeah. तो वो सडन थ्रस्ट नहीं हुआ. सो आई डिडंट Okay. पुश आउट, आई कुडंट Okay. पुश आउट एंड आई अच्छा. फेल डाउन. Okay. एंड चूंकि मेरा पैर नीचे पहुंचता नहीं है ज्यादा, हाँ, हाँ. तो व्हेन आई पुट माय लेग डाउन एंड दैट स्टोन आल्सो स्लिप्ड. Oh. So So I basically didn't have you a could choice, not I fell have down. the आपका पैर Yeah, I नीचे couldn't get जमीन any पे, grip down. हाँ, ग्रिप नहीं मिल हाँ, पाया. and जब तक आप पहुंचे तब तक the bike was already tilted and then correct. the stone also And gave then way. I had to take the fall. So I fell down. अब गिर तो गई, गाड़ी उठेगा नहीं, और मैं भी पानी में गिर गई. So I was soaked and it and was absolutely cold water. the bike, was that also fully submerged in water या वो मतलब आधा बाहर था और आधा अंदर था, ऐसा कुछ? आधा आधा. Okay. तो बिकॉज नीचे पत्थर थे तो उसमें थोड़ा सा वो रह गया था, अटक गया. लेकिन मैं पूरी गिर गई थी. Okay. तो लाइक आई सेड, वेयर आई वाज देयर इट वाज डीप. Okay. तो आई फेल डाउन एंड बाइक थोड़ा सा, क्योंकि उसका दोनों व्हील के हिसाब से वो थोड़ा सा आगे पीछे में, वो थोड़ा सा पानी में पूरा डूबा नहीं. Mm-hmm. बट माई एंटायर बैगेज वॉज कंप्लीटली सोक्ड. इट टुक अ बैड डिप. Okay. मतलब वो पूरा नहा के आया. हाँ. तो अभी मैं आई डोंट नो हाउ टू पिक इट अप क्योंकि द फोर्स ऑफ वाटर वॉज टू हाई. Mm-hmm. फिर आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर. हॉर्न वॉर्न बजा के देखा, वहां पे कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे. फिर एक कोई तो भी फोर व्हीलर आया वहां से, तो उसको रुकाया मैंने. मेरा भाई हेल्प कर दो. इज लाइक मैंने दारू पी है, मैं नहीं हेल्प करूंगा. अच्छा. Okay. उसके साथ एक लेडी भी थी. Mm-hmm. तो मैंने लिटरली हाथ जोड़े उसको, मैंने प्लीज हेल्प कर दो. Mm-hmm. आई जस्ट कांट डू एनीथिंग अराउंड दिस एंड मेरे से अकेले नहीं उठाया जाएगा क्योंकि हाँ. पानी का फोर्स भी बहुत ज्यादा है. तो प्लीज मुझे हेल्प करो. Mm-hmm. तो आफ्टर अबाउट 4-5 मिनट तब तक पानी में मेरा गाड़ी भी है, मेरा वो पड़ा सामान हुआ भी है ऐसे. कुछ Okay. पड़ा हुआ है. तो मैं बोली मैं भी पुश करती हूँ, आप भी पुश करो, लेट्स पुल इट आउट. हाँ. तो मान लिया थैंकफुली. फिर उठाया एंड बोला चलो मैं चढ़ा देता हूँ, आप पीछे से धक्का मारो उसको. अच्छा. तो करने को गया, अगेन द सेम थिंग हैपेंड विथ हिम आल्सो. वो भी फिसला, वो भी गिर गया, वो भी पूरा गीला हो गया. एंड आई आल्सो फेल सेकंड डिप. Okay. तो इतना मतलब वो ठंडे पानी में जो कोल्ड स्पा मिलता है ना, हाँ, तो वो उसने दैट इज. जितना पिया हुआ होगा वो सब उतर भी गई होगी उसकी. हाँ, उसकी उतर गई, मेरी तो मेरी भी वाट लगती हुई थी पूरी. हम्म. एंड देन 2 people केम फ्रॉम द अदर साइड. अच्छा.
एंड दे सेड हमारा तो दुकान इधर ही है। मैं बोला तुम यहाँ पे इतने सुनसान जगह पे दुकान डाल के क्या कर रहे हो? हाँ, ना हमारा रहता है सुबह में, रात में चलता है, मतलब दोपहर तक चलता है, दोपहर शाम तक, सनडाउन तक। अच्छा। फिर हम लोग इधर रुकते हैं कभी। तो आई सेड यार आई एम लकी दैट आई गॉट यू पीपल आउट हियर। हम्म, सो देन दे हेल्प मी एंड हिम टू गेट दैट बाइक आउट। अच्छा। फिर देखा तो पूरा एवरीथिंग वाज, ऑल माय बैग्स, एवरीथिंग, कपड़े वपड़े सब कुछ गीले थे, हम्म, लाइक ड्रिपिंग वाटर। एंड मेरा भी पूरा क्लोथ एंड ऑल वाज completely dripping. drenched. And Okay. I had still 10 kilometers to go down till I reached the village. हम्म. And that also complete off-roading. So इतना challenging, that first itself was So that so was very the start. challenging. That was the start of Yeah, the that was the adventurous start. trip. Absolutely, absolutely. Mhm. पहला मेरा, so that's why I said no, now you have to start counting where all I fell. And how many times I fell. Okay. गिरे पड़े, गिरी पड़ी इंसान हूँ बोलूंगी तो खराब गलत नहीं होगा मेरे लिए। नहीं, आई थिंक अल्टीमेटली ऑल द बाइकर्स, अगर आप गिर के उठ के नहीं चलो तो फिर यू आर नॉट अ राइडर, राइट? वो तो आई एब्सोल्युटली, थिंक सभी के एब्सोल्युटली। साथ है। आई डोंट नो हाँ, हाउ एंड मेनी टाइम्स देन आई हैव फॉलन डाउन। आई स्वेयर, एंड मेरे फॉल्स तो ऐसे खतरनाक होते हैं कि भाई इसमें से तो मैं और एक जन्म लेके निकलती हूँ। तो फिर वहां पे फिर आप वहां वो से, कैसे, मतलब गाड़ी स्टार्ट हुई कि नहीं हुई? हाँ हाँ, गाड़ी स्टार्ट हुई। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, थैंकफुली ओके। गाड़ी स्टार्ट हो गई। बट अगेन 10 kilometers of complete off-roading, no हम्म। light. And I think it was, I mean, moonlight भी नहीं था उतना ज्यादा। ओके। So, and as and when you take a turn around the mountain, हम्म। the the moonlight भी वैसे ही कहीं पे आता है, कहीं पे नहीं आता हाँ, है। इट्स जस्ट लाइक करेक्ट। सनलाइट, सनलाइट एक साइड या पे शैडो होता है, एक साइड पे या सनलाइट आता है। या सिमिलरली विद द मूनलाइट ऑल्सो। या तो जैसे तैसे अंदाजा लेके आई रीच्ड बनी अराउंड 9:30 समथिंग। ओके। एंड इतना लेट वो गांव में पहुंचना तो, I mean, that itself is another task. सो बनी तो में यू हैड पहुंच, अ प्लेस टू स्टे? बनी में आई टोल्ड यू नो, कथुआ में जो मेरा फ्रेंड है, अच्छा, उन्हीं का उनके जो। ब्रदर ही स्टेज इन बनी, एंड मतलब ओके। वही उनका घर है। ओके। तो ही स्टेज इन बनी एंड ही इज प्रीटी वेल नोन। व्हाट इज हिज नेम? तो his name is Pranav, but they call him Sunny भाई। ओके। तो वहां पे कहीं पे पूछ लो सनी का घर किधर है तो पहुंचा देंगे आपको। अच्छा, वेल नोन इन दैट एरिया। ओके। या वेल नोन इन दैट एरिया। ओके। सो आई रीच द प्लेस, देयर आई आस्क्ड वही सनी का घर किधर है। हाँ, हाँ। बोला आप यहाँ से जाओ, पुलिस चौकी के नीचे से, वहां पे हम्म। मिल जाएगा आपको, वहीं पे पूछ लो। ओके। तो या सो आई रीच देयर हाउस बाय अराउंड 9 o'clock। एंड वो ओके। बंदा मेरे को देख के शॉक हो गया, बोलते ये क्या, आप तो कभी शाम के पहुंचने वाले थे, अभी पहुंचे। हम्म। बोली देख ऐसा ऐसा सीन हो गया मेरे साथ, तो व्हाट शुड आई डू। तो बोला नहीं, आपको तो अभी यहाँ से जाने नहीं दूंगा, आगे के रास्ते तो और भी खराब है। बोली राइट। जाने नहीं देंगे, वो बाद में देखेंगे, पहले कपड़े तो सुखा ले तो मुझे। सो देयर यू हैड टू हॉल्ट फॉर एन एक्स्ट्रा डे, या अगले दिन वहां से निकल लिए? देयर आई हैड टू हॉल्ट फॉर क्लोज टू, आई थिंक 2 or 3 days आई हैड टू हॉल्ट। ओह, क्योंकि अच्छा। वेदर इतना खराब था। हम्म। इट वाज क्लाउडी, रेनी अ बिट, एंड व्हेन इट वाज नॉट रेनी आल्सो देयर वाज नो सन आउट। अच्छा, तो मतलब सन नहीं निकलेगा तो कपड़े सूखेंगे नहीं, कपड़े नहीं और कपड़े सूखेंगे। सूखेंगे नहीं तो मैं पहनूंगी क्या। या So all my gears, everything was completely uh, soaked, and my bag was completely soaked. ओके। I lost my camera due to that, because in spite of keeping it into all the waterproof thing and all, हम्म। because the entire baggage drowned, पानी घुस हम्म। गया उसमें। ओह, तो मेरा वो भी खराब हो गया, कैमरा खराब हो गया पूरा। इट वाज So I अ lost that. डीएसएलआर और एक्शन Yeah, no, कैमरा? it was a mirrorless. ओह माय गॉड। तो अच्छा खासा बड़ी नुकसान। लग गई मेरी उसमें। तो वो तो रिपेयर हो जाएगा, राइट?
नहीं, इट्स सो आई जस्ट इनफैक्ट अभी भी वो सर्विस सेंटर में डाल के रखा, मैं लेने भी नहीं गई, आई टू गो Okay. एंड टेक इट। तो दे सेड नथिंग कैन बी, इट कैन नॉट बी सैल्वेज्ड एट ऑल, Oh, okay. सो नाउ आई हैव टू बाय अ न्यू वन। You are listening to Candid Talks with BharatV. बट मे बी आई डोंट नो, देखूंगी जब मैं नेक्स्ट ट्रिप पे जाऊंगी तो आई हैव टू फाइंड अनदर बैग व्हिच विल एक्चुअली नॉट ड्राउन इफ आई पुट इट इन इट आल्सो। चलो एटलीस्ट तो यू यार रीच्ड द प्लेस 9 साढ़े 9 बजे पहुंचे, फिर भी इट वाज अ डिसेंट टाइम आप जो पहुंचे। हालांकि या माउंटेन में तो दैट आल्सो इज क्वाइट लेट, बिकॉज एक या तो दैट इज शाम वेरी होते ही, रिस्की टू। करेक्ट, शाम होते ही एक तो अंधेरा हो जाता है, दूसरा द लाइफ इन द माउंटेन रीजन इज डेड आफ्टर 7 o'clock एनीवेज। 7 बजे के बाद करेक्ट, तो अंधेरा और एकदम यू सब। कैन से द लाइफ इन द माउंटेन स्टॉप्स एज सून एज सन सेट्स। या या उसके बाद कोई नहीं आता, उसके बाद कोई दिखेगा भी नहीं। फिर अगर लेकिन आप जिंदा एटलीस्ट, हो हाँ, मिशैप्स के बाद, देन यू आर लकी टू हैव या समवन अराउंड, like I was lucky, I got two या people, I got a car, एक बेवड़ा। नहीं, बट But ऐसे में ना, then, आई हैव सीन दैट ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ इncidences, आपको कोई ना कोई हेल्प के लिए मिल ही जाता है। आई मीन भगवान जो है वो ऐसे हाँ, कुछ ना कुछ हो जाता है कि मतलब यू गेट हेल्प समहाउ और दी अदर, आपको मिल जाती है हेल्प। करेक्ट, और ऐसे एब्सोल्युटली। सिनेरियोज के लिए ही इन दीज काइंड ऑफ प्लेसेस, इट्स ऑब्वियसली ये तो आपका सोलो राइड था ऑन पर्पस, बट टिपिकली अगर हम जाते हैं तो ऐसे में इसलिए ग्रुप राइड हम लोग प्रेफर करते हैं, ताकि एटलीस्ट अगर कुछ हो तो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकें। सो Yeah, बट this एनीवेज this this फाइनली thing यू have रीच देयर। this thing has been reiterated to me all throughout this entire tour. आपके साथ कोई होता तो अच्छा होता, आपके अच्छा साथ होता। होता तो कोई अच्छा होता, कोई तो साथ में लेके चलते, अकेली कहाँ चल दिया आपने, भाई यही तो दिस बात वाज थी अ, इस एंटायर ट्रिप या की, मेरे को अगर सोलो करना था। exactly. And this was, you can say, the salient feature or the हम्म। salient question that was being asked to me. आप अकेली क्यों चली है, आपके साथ कोई और क्यों नहीं है? तो यहाँ पे आप 2 दिन 2-3 दिन रुके, एंड हाँ, उसके ऑनवर्ड्स फर्दर नेक्स्ट उसका जो डेस्टिनेशन था उसके आगे कौन सी जगह के लिए आप निकले फिर बाद में? सो मैंने अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, बट आई डिडंट वेस्ट माय टाइम अराउंड हियर। हम्म। तो मैं बोली चलो बनी में रुकी हूँ तो बनी के आजू बाजू कुछ देख लेती हूँ, नजदीक में ही कुछ देख लेती हूँ, कपड़े सूखने तक। थैंकफुली माय गियर्स ड्राइड ऑफ इन कपल ऑफ डेज। हम्म। तो वहां से मैंने पूछा कि यहाँ पे और कहाँ जा सकते हैं, लाइक ओके। हूँ मैं यहाँ पे जब तक सूख रहा है। हम्म। तो देन दे सेड कि यहाँ से आप डगर वैली करके एक जगह है, वहां ओके। जाके आना। अच्छा। सो मैप में मैंने चेक किया डगर वैली, हम्म। तो इट वाज शोइंग दैट आई इट वाज शोइंग मी अबाउट 160 और किलोमीटर्स, 130 160 कुछ बता रहा था मैप पे, फ्रॉम दैट प्लेस जहाँ पे आप रुके थे। फ्रॉम बनी टू डगर वैली। 160 also in mountain region, it's quite a good distance. या एग्जैक्टली, बट आई आस्क्ड द लोकल्स। जो अच्छा। मैं बोलती हूँ ना, ये लोकल गूगल जो है बहुत हाँ, काम आता है। तो उन्होंने शॉर्टकट बताया लोकल होगा। गूगल से पूछा, गूगल गूगल भाई कहाँ जाए हम? तो देवर लाइक आप एक काम करो, इधर से आप 3 किलोमीटर उस तरफ जाओ, पेट्रोल पंप के आगे जाओ, वहां से एक पुल है, वो पुल को पार करना, उस पहाड़ पे जाओगे, वहां से आप डगर वैली चले जाओ। अच्छा। और कितना किलोमीटर है वहां से? हाँ, हाउ मच? हार्डली 35 किलोमीटर। वाह, मतलब कहाँ 160 किलोमीटर, कहाँ 35 किलोमीटर। हाँ, ऑसम। तो बनी से रिटर्न, बनी से डगर वैली एंड रिटर्न वाज अबाउट 73 किलोमीटर। ओके। तो क्योंकि मैं थोड़ा डगर वैली से भी थोड़ा और आगे गई थी, एंड देन ओके। आई रिटर्न। ओके। तो एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, दैट वैली इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेरेस फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग करते हैं वहां पे। ओके। या
माउंटेन्स पे टिपिकली इट्स दो स्टेप फार्मिंग Yeah. पूरा. तो एंड सिंस इट वाज सितंबर, यू नो, जो फसल होती है वो हल्के हल्के से सूखना शुरू होता है. Okay. तो ग्रीन शाफ्ट रहता है, उसके ऊपर हल्का सा एक येलोइश लुक आता है. Mhm. नहीं, एक ब्राउनिश लुक आता है, फिर थोड़ा सा रेडिश, एंड देन ऑन टॉप इट इज लाइक गोल्डन. Okay. तो ये शेड्स होते हैं पूरा. Okay. एंड व्हेन यू टेक अ लुक फ्रॉम फार, it looks like a big velvet carpet laid on that steps, and you combine it with the absolutely clear blue sky. Mhm. you It looks you beautiful. Yeah. can imagine that Yeah. look around that, and there is this river passing from there. आप ड्रोन लेके गए थे क्या? हाँ, ड्रोन 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 नहीं यार, मेरे को कैमरा ठीक से चलाने नहीं आती है, मैं ड्रोन कहाँ से चलाने. अगर ड्रोन होता तो ड्रोन शॉट ऊपर से बहुत So अमेजिंग yeah, आता. but not in every places drones are also allowed in those regions because of army presence and Yeah. Yeah. security reasons Yeah. basically. Yeah. Yeah. But हाँ, कुछ चीजें मुझे लगता है ना कि ये दिमाग में रहे तो ही अच्छा है. I know. Yeah. That's when you remember, memorize, and those memories बहुत sweet रहते हैं when you uh, sit back and reminisce around it. Absolutely. जब आप सोचते हैं कि हाँ यार ये जगह पे गई थी, अगर मैं ड्रोन लेके जाती ना, मैं ड्रोन पे ज्यादा ध्यान देती और हाँ. फोटोग्राफ पे ज्यादा ध्यान देती rather than absorb the Yeah. nature around me. Absolutely. एंड बहुत, यानी कि बहुत ब्यूटीफुल था वो जगह. पीपल आर आल्सो नाइस. आई मेट दिस वुमन, मतलब वापस में डगर वैली से वापस आ रही थी, सो इट वाज ऑलमोस्ट आफ्टरनून. Mhm. सुबह मैं निकली थी नाश्ता वास्ता करके, आराम से ही निकली थी, 70 किलोमीटर था, आराम से निकली थी. By the time I was returning, it was 1 o'clock or something, and I stopped at a place कि चलो चाय तो पी के जाती हूँ. Okay. और वहां से व्यू अच्छा था, तो आई जस्ट स्टॉप देयर. छोटू सा एक ढाबा था, तो वहां पे एक आंटी थी. सो शी वाज वेरी फैसिनेटेड बिकॉज जनरली डगर वैली पे कोई बाइकर्स ऐसा कोई जाता नहीं है, जाता नहीं. एंड इट्स अ लेस एक्सप्लोर्ड प्लेस. Mhm. So except the localites and maybe people living in Jammu and Kashmir may know about that place or तो something like वहाँ that. But आपने कुछ फोटोग्राफ्स खींच पाए या नहीं? yes, मोबाइल फोन yes, से. absolutely. प्लीज डू शेयर दोस Absolutely. फोटोग्राफ्स. I वो I भी. will definitely share those Yeah. photographs. वाटरफॉल में गिरने का फोटोग्राफ नहीं है, क्योंकि एक तो अंधेरा था और मैं उस परिस्थिति में नहीं थी कि मैं फोटोग्राफ ले सकूं. एक्शन कैमरा होता उसमें वो कैप्चर हो जाता. हाँ, I'm a very lazy photographer. मैं कभी कभी एक्शन कैमरा भी चालू नहीं रखती. एनीवेज. I'm नहीं, इट not वाज. those. I have to try and become those typical YouTubers or bloggers to keep my camera on at every point of नहीं, time. see, that is totally a different ball game altogether. I don't think Yeah. we are in those kind of categories because uh, we are more of a riders rather than YouTubers or motovloggers, because we ride to cherish the nature. We ride to cherish to create and make the memories and remember those True. memories, right? Correct. हाँ, ऑब्वियसली ऐसे में आप जा रहे हो तो थोड़ा बहुत आप फोटोग्राफ्स वगैरह खींच के एंड वीडियोस वगैरह लेके, सो दैट दोज आर योर मेमोरीज व्हिच यू प्रिजर्व फॉर द लाइफ टाइम. Yeah. बट वो जो मोटो ब्लॉगर्स होते हैं वो तो टोटली दे आर प्योरली डूइंग इट Yeah, फ्रॉम द they're कमर्शियल स्टैंड उन पॉइंट. लोग जाते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए. हाँ, वो जाते ही ब्लॉगिंग करने के लिए. वो लोग तो हाँ, बाइक चलाते चलाते भी पता नहीं अलग अलग तरीके के हैंडल और वो एंगल से पता नहीं पूरा वो लेते हैं. सो दैट इज exactly, टोटली exactly. डिफरेंट. I appreciate their efforts, नहीं, बट but दैट मैं इज उनमें से नहीं बन वेरी सकती. डिफिकल्ट स्किल आल्सो. आई मीन यू नीड अ प्रॉपर स्किल सेट फॉर दैट. Yeah, definitely, and that's why I said I appreciate the efforts Yeah, in doing it, and constantly absolutely. talking on the. I mean, while riding, also concentrating on what content you're giving, and then Yeah, riding safely, doing a number of things like multitasking. I don't I say know. it is Yeah, safe, but then yeah, whatever they are doing, they're doing.
Yeah, I mean this thing all throughout, even all throughout my ride, हम्म, माय स्पॉन्सर्स, मैं कभी कभी फोटो सिर्फ इसलिए निकालती थी क्योंकि मुझे उस दिन का पोस्ट डालना है हाँ, इंस्टाग्राम पे। राइट, तो वो एंड या थैंक्स टू माय social media handler, I mean my friend who handled the social media for me, ओके, Savio Tavadia. हाँ हाँ, He is Pune based. ओके, उसने उसने मेरे लिए, मतलब ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू गिव हिम द कंटेंट एंड ही यूज्ड टू मॉडिफाई अ बिट एंड पोस्ट इट। हम्म, बट अगर उसने वो चीज शिद्दत से नहीं की होती ना, तो शायद ये स्टोरी मेरा इंस्टाग्राम पे रेगुलर आता नहीं था, ना ओके, इंस्टाग्राम पे ना एफबी पे। हम्म, because over when I do such long rides, I tend to get lazy, matlab I cannot do it continuously, these things. obviously it's So tiring as well, he kept following up with me कि हाँ यार एक फोटोग्राफ, कुछ तो भी फोटोग्राफ लेके डाल, मेरे को भेजना है। yeah, Then Lalit also used to push me for it, and then of course Pramerica, Lone Rangers, हम्म, Lone Ranger India, and all those people, you know, they wanted photographs. राइट, तो इस वजह से मैंने फोटोग्राफ लिए, ओके। जगह जगह पे रुक रुक के फोटोग्राफ्स लिए। नहीं, गुड, एटलीस्ट अब अदरवाइज आई आपको डोंट आदत पड़ गई थिंक ना, ऑल अब दिस अगली वुड बार बी। से आप विदाउट थिंकिंग यू शुड टेक। Yeah, otherwise I would have been just riding and absorbing whatever is there around me, and maybe just click some photographs when I felt like it. Types. Right. Yeah. Finally, it's good that at least you reached there on time and you could spend some time looking around for local sightseeing. Yes. And which valley you said? Dagar Valley. Dagar Valley. Dagar Valley. Dhaggar. Dagar Okay, Valley. You Dagar won't Valley. find the route on Google Map for it. Okay, I'm not sure if it is updated now, okay. but the road is still under making, and it is just about 70 kilometers from Bani. Bani. चलिए, so फिर we'll take a break now, and all the listeners, if you have any questions, please feel free to add your comments in the comment section. Add your questions, and we'll be happy to respond you back. अपना Yes. डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में. Thank you all so much, Cool. and thank you, Thank Shilpa, you. and we'll catch up again. Stay safe. You too. Bye now. Absolutely. Thank you and See you take care. soon. Bye Take bye. care. Bye bye. So that was Shilpa Balakrishnan, the female solo biker from Mumbai, who attempted the 90 days long Trans-Himalayan Conquest ride on her Domina bike in 2021. If you like the show, please do like, subscribe and share with others. If listening on Apple Podcast, do not forget to rate 5 stars. If on Spotify or YouTube, do not forget to subscribe and share. All the bikers can listen to this podcast episode on bikersclub.in. इसके साथ हम आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं. बातों का सिलसिला जारी रहेगा with Shilpa Balakrishnan in our next episode of the podcast series Himalayan Conquest 2021, only on Candid Talks with BharatV. Stay home, stay safe. This is BharatV signing off for today. दुआओं में याद रखना. जय हिंद. You are listening to Candid Talks with BharatV.